देखो गजब का ये नज़ारा है, क्या व्यू है इतना बढ़िया। पहाड़ों पे मैं बाइक चला रहा हूँ। 5.5 किलोमीटर्स है एवलांच। सो हम लोगों ने पीछे 60 रुपीज़ दिया। वो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, वो लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसा ऐसा बोर्ड लगा रखे हैं एलिफेंट है और ये है, बट वो ऐसा नहीं है कि एलिफेंट और ये कुछ आएगा रास्ते में। BMW छोटा सा झरना, छोटा सा झरना नहीं बोलेंगे, नाला भी नहीं बोलेंगे, ऐसे बस कहीं से बह रहा है। जाना है, चुपचाप निकल लो भाई। हाँ काफी है ना यार, बहुत ही घने जंगलों से होते हुए बाइकर। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, थैंक गॉड ढंग की जगह पे तो आ गए। पहुंच गए भाई, डर लग रहा था कहाँ जा रहे हैं। So now I am here at Avalanche. So अगर आप नीचे की तरफ देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। इस तरफ अवालांच डैम होगा। हम लोग आए उस तरफ से, और जब यहाँ पे मैं पूरा 360 देख पा रहा हूँ। चारों तरफ पहाड़ी है, वैली जैसा है बीच में। जो कह रहे हैं व्यू पॉइंट है इधर। तो कोई दिख क्यों नहीं रहा मुझे, इंसान क्यों नहीं दिख रहे हैं, इतने लोग आके जा कहाँ रहे हैं। कुछ लोग वहाँ दूर दिख रहे हैं, इधर से कुछ लोग जाते हैं। ओके वो है, इधर उधर कुछ लोग बैठे हैं। हम लोग चल, लेट्स गो देयर एंड सी। ओके, ये ट्री प्लांटेशन कर रखा है इन लोगों ने। अगर ध्यान से आप देखो, पूरा ब्लू 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 पैकेट्स दिख रहे होंगे, पैकेट जैसा सारे प्लांट्स लगा रहे हैं इन लोगों ने।
या मे भी कुछ फार्मिंग है अलग तरह की, कुछ अलग चीज़ है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है वो है क्या एग्जैक्टली। तो वाटर का फ्लो उधर से है, ये पहाड़ी है एंड दिस इट्स फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अभी चलेंगे उस तरफ। Okay, I'll go that side there and take a pic. वापस चल रहा हूँ मैं, चलते हैं वापस वहाँ उस तरफ जाएंगे और उसमें बैठ के कुछ शॉट्स लेते हैं, उसके बाद बैक टू ऊटी। ऊटी में भी जहाँ की तभी धूप है, आई थिंक ऊटी में इतनी नहीं होगी, ऊटी मेन सिटी में, क्योंकि वैली में जहाँ पे हम लोग रूम लिया मैंने। 1 मिनट मास्क काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऊटी का, मज़ा आ गया। अरे बात में भूल गया कि मुझे अभी अपनी बाइक का फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो ऑयल लीकेज है वो चेक कराना है। तो निकलते हैं जल्दी, वरना फिर रात हो जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा, कल बेंगलोर निकलना है, लेट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे उस तरफ। चलो भाई मैगी खाते हैं, लेट्स गो। चलो थोड़ी सी मैगी खाते हैं। तो घूमते घूमते हमें ध्यान नहीं रहा कि इसका क्लोज होने का टाइम 4:30 है और 4 अभी भी कल मेरे श्योर नहीं है। तो एकदम अचानक से लोग गायब हो गए। हम लोग बैठ के चाय पीना स्टार्ट किए, देख रहे कोई नहीं दिख रहा, कुछ लोग उधर हैं, इधर सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो निकलते हैं। वैसे भी इतना डेंस ये फॉरेस्ट है, इतना घना है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर बाइक में लाइट अपनी वीक है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए निकलते हैं। What is the time now? I'll put my phone here. Let me open map first. So काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आप ये देख सकते हो एंट्री गेट है यहाँ पे काफ़ी घना है। उधर कहीं लेक है, उधर एक चर्च दिख रहा है, इधर बाइक्स खड़ी हैं, ये पार्किंग है।
बहुत ही मस्त। अगर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन दे आपको एक दिन रुकने का तो आप मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पे आप कोई ग्रुप के साथ रुको। उधर पावर हाउस भी है, लेकिन उधर हमारे पास जाने का टाइम नहीं है, लेट हो रहा है। हेलो Hello, good evening, sir. हाँ या गुड इवनिंग। So, what about dinner, sir? You want dinner today night? डिनर नो डिनर आई डोंट वांट। Okay, fine. या थैंक यू। Okay, let's go. Take a U-turn. चलो चलते हैं टाइगर हिल पे। क्या व्यू है यार। कितना घना दिख रहा है, बाप रे। हाँ कर गजब का घना है। इतना घना तो हमने बांदीपुरा में भी नहीं देखा। मार्सिना गुड़ी होके आए थे आई थिंक, उसमें भी इतना घना नहीं मिला डेंस फॉरेस्ट। हाँ बियर हिल्स से हम लोग जब आए थे तब मधुमलाई टाइगर रिजर्व की तरफ से तब मिला था ऐसा।